Hello, my aspiring officers for the RBI Grade B examination of 2024. So, hope guys you are staying healthy and you are enjoying your life. So, talking about today's video, guys, we'll be discussing about the general awareness for the RBI Grade B examination of 2024. Now, before I proceed further on, there are many doubts in the mind of a student when I talk about general awareness, because some of them start saying, "Sir, are we talking about current affairs? Are we talking about schemes? Are we talking about reports? Are we talking about the general awareness for the phase 1 of the RBI, or are we talking about something else?" Because this is quite a confusing term. If I talk about in general layman term, guys, general awareness basically consists of, in the RBI examination phase 1, the term is there, it consists of not just the GA part, that is the normal GA that we talk about general awareness. It also consists of ESI, where you find reports, you find schemes, you find current affairs that could be related to health, education. Then we have the finance current affairs, where we can see RBI website is there, primary and secondary market current affairs are there. These are the things. Along with that, the class conclusion consists of static GA. Now, if I talk about these things, guys, from here, these are the topics which are relevant not just for the phase 1 but also for the phase 2 of the examination also. But इनमें से छूटा कौन, जो इकलौता रह गया, वो है ये वाला GA, जिसकी हम जनरल टर्म में बात ही नहीं करते. बिकॉज व्हेन आई ऑलवेज टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, वन थिंग दैट इज इन माय माइंड इज स्कीम्स मुश्किल है, रिपोर्ट्स मुश्किल है, क्वेश्चंस तो ये भी पूछे जाते हैं ना पर्संस इन न्यूज के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर, डेज इन न्यूज के ऊपर, तो वो भी पूछे जा रहे हैं. बट दे आर रेलिवेंट only for the phase 1 of the examination, but that needs also to be prepared now, guys. So this is the agenda of this video, where I will be focusing on this specific topic of general awareness, not the whole current affairs. For the whole current affairs, I have already made a video just a few days back, so you can watch that specific video for the understanding of the current affairs for the RBI examination. Here we are just sticking to this specific GA part here. Now, guys, the first and the foremost thing when I talk about this any topic is that why actually we have to start reading that specific topic. Second is, what are the things that I have to cover in that specific topic, and I've just told you there is no defined syllabus for the general awareness. ठीक है, ESI का दिया हुआ है, फाइनेंस का दिया हुआ है, GA का कुछ नहीं बताया उन्होंने. But what needs to be done, then how can I be sure on these topics? I will be telling you about that. श्योरिटी का राज बताऊंगा. फिर आ जाता है व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू हैव टू रीड फॉर प्रिपेयरिंग दिस GA. देन the last important thing is, guys, for how many months you actually have to start reading the sources so that you can score really good marks in the general awareness part. Now, first let me talk about that why you have to start preparing GA. So you can see just behind me the weightage of general awareness here, guys. So this is actually about the whole 80 marks of paper that you have seen here, out of which if I talk about the current affairs part, it was around 71 questions. ठीक है, 70 questions आए थे. This year, previous year, they were around 64 questions. And if I specifically talk about GA, guys, so we have seen 19 questions, and then there were 23 questions. And if I talk about 2021, तो वहां पे भी ट्रेंड जो सिमिलर ही था, around 25 to 28 questions were there in your 2021 examination. Now, guys, if you look at this specific trend, you will be seeing that the questions from general awareness are really low. ठीक है, फिर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि ESI फाइनेंस तो फेज 2 में भी आएगा. आई शुड फोकस ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक्स. GA में छोड़ देता हूं. बट गाइस, लुक एट वन थिंग हियर. यू कैन सी द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ RBI इज गेटिंग टफर एंड टफर डे बाय डे. ठीक है, बट द पॉइंट इज, इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, एटलीस्ट फेज 1 कट ऑफ तो बहुत आराम से निकल जाएगी. ठीक है, सो दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन ESI, हु आर नॉट गुड इन स्कीम्स, हु आर नॉट गुड इन रिपोर्ट्स, दे कैन फॉलो दिस स्ट्रेटजी. इसको इतना पढ़ो और आपका फेज 1 में हेल्प कर जाएगा. अगर 19 नहीं आते या 23 क्वेश्चन नहीं आते, इफ यू प्रिपेयर 50% ऑफ GA, देन आल्सो योर लोड विल बी लेस. सेक्शन कट ऑफ तो निकाल ही लोगे ना. So this is the thing why the GA section is important here. Now, let me talk about the second important things what actually GA consists of. So as we have just discussed, there is no defined syllabus, but guys, I told you one thing here, that is analysis of previous year question paper is very important here. So for that specific analysis, guys, we are providing you this specific guidebook here, where you will be getting the previous year question papers
of the past 5 years examination of RBI, and they are absolutely free. You just have to do one thing. Click on the link that is given in the description below, and you can have this guidebook with yourself, from which you can not only analyze GA part, you can analyze the whole current affairs, other topics like quant, reasoning, English, finance and management. What you need to prepare. What about descriptive? Do not worry, everything you will be getting here. Okay. Now, based on this analysis of this examinations of past 5 years, we have shortlisted these topics on which the questions are being seen. So what are these topics all about? You can see behind me that is first topic is first in news. First in news is that topic which is not a general topic. मतलब कोई ऐसा topic नहीं है कि मैं बोलूँ first in news आ गया. First in news basically is a culmination of all the other topics, and if something has taken place for the first time, the probability of getting question on this thing is very, very high. So that's why I always say we have created a topic by this, or we have created a subtopic by the name of first in news. Then you can talk about some government programs which are being launched. ठीक है जी, केरला ने बैंडिकूट लॉन्च कर दिया, या फिर किसी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, ठीक है, जो कि सिलेबस से रिलेटेड नहीं है ऐसा के, बट फिर भी फेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. That is covered here. Then you can talk about the agreements, banking agreements are there, ठीक है जी. Country India is signing agreement with some countries, so that can be covered here. Summits and conferences, awards, science and tech, defense, environment, news, sports, one of the important topic of RBI. It generally used to ask question on sports. Then you can see behind me here, awards are there, days in news हो गए, क्वेश्चन आया था, इस बार भी पूछा गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पे किस सेटअप के लिए बनाया जाता है. So that is the thing. So you can see that thing. That is the topics here. Still there will be some doubt in the mind of the student, sir, how can we be so sure about these topics? Let me just give you clarity on that thing. You can see behind me there is a question on the Comptroller and Auditor General, that is Mr. Girish Chandra Murmu, who has been re-elected as the external auditor of an organization, and his term was being discussed. So that is related to persons in news. Then Draupadi Murmu ji has won the Yellow Star Award. So the question was there on awards here. Then if I talk about the next prominent thing, the tropical cyclone. So you can see the cyclone Biparjoy was seen in news. So you have seen a question in phase 1 of the examination. Environment. ठीक है जी. Then we have the curve mark exercise, defense exercises. So this is the things, guys. You can see here that is the questions are being asked from this specific sheet. So ये आपको सबसे पहले अपने पास नोट डाउन कर लेना. कभी भी कुछ पढ़ना है तो this is how you could mark down the news for your understanding. Now the second important thing, GA देखो देखने में कितना मजेदार लगता है कि यार हो जाएगा, क्या होगा, डिटेल्स पूछ लेंगे, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ूंगा तो याद कर लूंगा. Then we have defense exercises, ठीक है जी. Now the question is not about that what you have to read. The question is basically to understand how the GA has evolved in the past 5 years. If I just show you the questions here, you can see in the 2017 examination, look at the questions. They are hardcore factual and straightforward. Nothing being कोई बदल को change है ही नहीं. क्या पूछा है? Sonai Rupai Wildlife Sanctuary where it is NATO summit where it has taken place. Easy. Again you can see summits and news and places in news is there. Topics वही हैं, but look at the level of questions. Easy. Person in news. MAPA is related to which sport? Then who has recommended the Reserve Bank of India's public credit registry portal? You can see these questions. Banking news, person in news, or you can talk sports news here. Then you can see the examination in 2019. Little bit of the level was enhanced, but फिर भी इतना मुश्किल नहीं था, और बहुत खुले नंबर आया बच्चों के जीवन, बहुत खुले. मैं बताऊं 19 में देखो ट्रेंड, NBFC क्रेडिट सेशन, ठीक है जी, हेडक्वार्टर ऑफ दैट स्पेसिफिक थिंग. Nobel Prize for Chemistry is given for the development of. Basic question you should always remember, किसको मिला है, किसके लिए मिला है, यही पूछते थे. But then guys, in the year 2021, when the examination pattern of the RBI changed, you can see the change in the GA section also. Let me just show you the question here. Now you can see here, there are not basic questions like that, not single one which you can solve within a few seconds. They are asking you questions in a statement based form. Little bit in depth the questions were being asked. You can see here, it is not simply question on Amazon. It is saying Amazon's market valuation. So something of news about Amazon was this, and it says this e-commerce company was started earliest as which of the following company. पढ़ लो, अब आसान तो है नहीं. 17 में तो सीधा पूछा कहां पे सेंचुरी खत्म, यहां पे तो पूछा Amazon करता क्या था. Becoming difficult. Now
This is not the end here, guys. You can see 2022 level increased here. Singareni Coalfields was seen in news. They have not asked the basic question where is Singareni Coalfields. They have twisted the question where they have said that the Singareni Coalfield is a government coal mining company owned by which government and the government of India. Then you can see this specific question here. IRDA basically question. ठीक है जी, which insurance company has basically now become the second largest general insurance? Earlier they always used to ask largest, top पढ़ लिया बस ठीक है. Second largest, little bit in depth. Look at this question on Federal Reserve System. This is again not an easy question because the question was Jerome Powell got elected for the second time as a president of Federal Reserve. That's the news was there. But look at the thing that is there. They are asking when it was created. So they are going into the background there. So which means the level of GA you can see here the questions are increased. तो इतना आसान नहीं है अभी, इसीलिए तो पढ़ना है इसको. कितना ऐसा नहीं खड़े सुबह उठे और हो जाएगा, नहीं, पढ़ना तो देखो पड़ेगा. अब आते हैं जो इस साल फुटा बम. ठीक है, स्कीम्स रिपोर्ट्स पे बम नहीं फुटा, बम फुटा था जीए के ऊपर. कैसे? लुक एट द क्वेश्चन हियर. बड़े बड़े क्वेश्चन आए, पता नहीं उन मतलब जो एग्जामिनर आई वेट आई कैन फील इज उसने सोचा था कि बस देखते सारे क्वेश्चन बच्चा भूल जाए. एल नीनो कंसेप्ट वाज आस्क्ड. ठीक है जी. Now El Nino is a concept because the monsoon is going on. El Nino concept was seen in news. They have started asking question on El Nino concept. किससे relate करता है? चलो जी, हो गया. दूसरा question if you can talk about here, Indian origin climate researcher who has been picked for this award. That is the general questions that used to be asked till the year 2017. Basic questions. Now further on what is saying, which is the highest scientific honor for Netherlands and has a prize money of now, which means you just do not have to write the basic नहीं पढ़नी. अब उन्होंने प्राइज मनी पूछी, आपको जैसा यह पता होता कि नेदरलैंड्स देता है, कितना देता है नहीं पता. एक क्वेश्चन और पूछता हूं. They have asked you a question on because recently the 75 rupees coin was basically unveiled by the Prime Minister of India. They asked you a question, this coin is made up of which metal? So you can see the level of question what they are asking. ठीक है जी. तो इतने तो मतलब ये तो पूछा ही नहीं है, तो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ही अलग लेवल पूछ रहे हैं. यू कैन टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन हियर. ट्रॉपिकल साइक्लोन. सो बिपरजॉय वाज ट्रॉपिकल साइक्लोन व्हिच वाज सीन इन न्यूज़. एवरीबॉडी वाज हर्ड अबाउट बिपरजॉय. कहां पे हुआ है, किसने किया, सब कुछ. व्हाट दे हैव आस्क्ड यू. ठीक है जी. व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द नेक्स्ट साइक्लोन एंड इट इज बीइंग रिकमेंडेड बाय व्हिच कंट्री. यू कैन सी हियर. आउट ऑफ द बॉक्स मतलब तोते उड़ गए इस बार कि हो क्या रहा है. तो इसका मतलब यार एक चीज तो समझ लो कि जीए इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. इट्स नॉट अबाउट ईएसआई इज डिफिकल्ट, फाइनेंस, जीए इज गेटिंग डिफिकल्ट. और ये जो 19 या 23 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, दिस इज मेक और ब्रेक दिस ईयर. बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स ऑलवेज यूज्ड टू प्ले ऑन जीए के मैं कुछ टाइम पढ़ूंगा तो मेरा कट ऑफ निकल जाएगा. वही उन्होंने मुश्किल कर दी है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर. क्लियर ऑन दिस थिंग कि दिस यू कैन सी द ट्रेंड हियर कि इससे कट ऑफ तो गिरेगी. और अगले साल मैं आपको ये भी श्योरिटी करके जा रहा हूं इन दिस वीडियो, द पेपर ऑफ जीए विल बी टफर. द क्वेश्चंस ऑन जीए विल बी टफर. दे विल नॉट बी द इजी वन बिकॉज वी हैव सीन द रीसेंट टाइम 21, 22, 23. They are enhancing the level of GA. You could see the proper statement with question 6 statements are given here. They can ask you which of the following statements given here are correct or incorrect. That could be the trend that you can see next year also. तो ये होगा. अब करना क्या है. ठीक है जी. मैं पहले डरा नहीं रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी टेरिफाइड, बी रिलैक्स नाउ. द पॉइंट हियर इज कि अब इसको पढ़ना कहां से है. ठीक है जी. सो गाइस when I talk about sources, there are basically two types of sources. One source is basically known as the online sources. ठीक है जी. Second are offline sources because there are many students who used to read newspapers on offline mode. घर पे आता है, पढ़ते हैं. Some of them used to read the newspapers online mode. So both are fine. And at this point of time, if you want to read newspaper, it's the best time to start reading newspapers. Have an habit of newspapers. But होता क्या मैं बताता हूँ. दो चीजें सबसे बड़ी होती हैं. सबसे पहले what you will do, you will watch my video, you will say okay, बहुत मुश्किल आने वाला है, पकड़ लो न्यूज़पेपर. पकड़ा न्यूज़पेपर, 2 दिन पकड़ोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे. तीसरी चीज क्या होने वाली है जो अभी बताऊंगा आगे. ठीक है जी.
आई विल शो यू सम अदर थिंग्स ऑल्सो विच यू कैन वॉच. यू विल इनिशियली वर्क ऑन दैट थिंग, फिर छोड़ दोगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से भी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन यू आर लुकिंग एट द सोर्सेज, इट इज एक्चुअली कंसिस्टेंसी. That consistently you have to follow the sources which I will be telling to you. अगर नहीं करोगे तो guys, let me be honest, I can tell you a list of number sources, but ultimately the result will be like this. कुछ फायदा नहीं होने वाला. तो वो तो करना है. अब क्या करना है, let us discuss the question here. So if I talk about, we have seen that there were around 22 questions that were from GA. ठीक है जी. So this is the mark question here. ठीक है जी. 3 questions were from PIB, 3 questions were from Live Mint, then we have 4 questions from Hindu, 7 from Economic Times and 5 from the other newspapers like Indian Express, Hindu Business Line. एक क्वेश्चन वहां से आ गया. अब the question still remains the important thing कि अब इसमें से मैं शॉर्टलिस्ट कौन सा करूं, कि तो 3 क्वेश्चन है पीआईबी में, लाइव मिंट में तो 3 क्वेश्चन है. हर बंदा बोलता है पीआईबी पढ़ो, बट क्वेश्चंस आर ओनली 3 हियर. So guys, this is something which is tricky here, is because GA is one topic where I will not say just follow single source. One thing that I would personally be advising to you is, guys, for specifically for the GA, you should read one compilation, because it is something that could be seen anywhere. हो सकता है कोई न्यूज इंडिया टुडे ने कवर की होगी, कुछ न्यूज हिंदू बिजनेस लाइन ने कवर की होगी. तो बेटर इज यू फॉलो वन स्टैंडर्ड सोर्स दैट यू शुड ऑलवेज रीड. आई एम नॉट ऑफ दैट पर्सन के विल से न्यूज पेपर पढ़ना नहीं है. पढ़िए, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, हाईलाइट दोस पॉइंट्स, रीड डाउन दोस नोट्स एंड मेक योर नोट्स. ठीक है, अगेन इट्स अ सब्जेक्टिविटी, यू वांट टू मेक योर नोट और नॉट, बट दैट इज टोटली ऑन यू. तो पर जीए के लिए हमेशा कंपाइलेशंस पढ़िए. ठीक है जी. We ourselves are providing compilations to you. ठीक है जी. That is the current tab compilations are there. We have specifically designed our GA section in such a way where you will be getting the proper topics by topics. हमने news बनाई है proper tabular form में to make it easy for you to understand. ठीक है. And to get to know more about that, you can have a link on that is link is given in the description below, so you can again have a look on that specific course also. This is the thing that we are doing. But if you are a student who wants to go with newspapers, so you can see the questions that are there in this. Comptroller Auditor General of India wala, ठीक है जी, CAG, it was in Hindu. Then you can see the country, Draupadi Murmu, it was seen in PIB. Then if I talk about the Strategic Petroleum Reserve question that was there, it was again that we can see it was in the Live Mint newspaper. Then अगर मैं बात करूं कर्व मार्ग, it was in Economic Times. So now if I conclude this thing, there is not a single source. मैं can बोलूं कि नहीं यार आप PIB से ही पढ़ लो. But if you go with my opinion, I will say from the newspapers, the prominent newspapers like Economic Times, Hindu or Live Mint, you should go with one newspaper. And if I talk about specifically GA, the Economic Times एक ऐसा newspaper है, if you can read that newspaper, you can follow that specific newspaper for the GA section. But along with that, guys, what you can do here is YouTube is one of the important source medium here. So we are conducting the important things for you. ठीक है जी. YouTube पे हम लोग आपके लिए क्या लेके आते हैं, डिफरेंट सीरीज लेके आ रहे हैं, जहां पे आप YouTube पे सिर्फ अपना टाइम लेके और आप कर लेते हैं. जैसे पीआईबी मैं बोलता हूं, तो पीआईबी हम करंट अफेयर्स में क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग हियर. ठीक है. न्यूज आई एम स्पेसिफिकली शॉर्टलिस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन. आरबीआई की कोई न्यूज है जो कि फाइनेंस करंट अफेयर्स है, या फिर जो फेज 1 रिलेटेड बैंकिंग न्यूज है, दैट Kritika ma'am is discussing with you. ठीक है. And if you are someone who has read about this thing but somehow there is एक टाइम होता है कि मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी हेल्प कर दो, तो डू नॉट वरी गाइस, वी आर प्रोवाइडिंग यू द descriptive video also. That is again relevant for the examination. You can come here, start writing your descriptive answers. तो वहां पे भी आपकी हेल्प हो सकती है. ठीक है. तो this is how you can see here in the YouTube also. You can subscribe to our channel. ठीक है. And you can start watching these videos. ठीक है जी, which will be helping in preparing the general awareness section. That's the thing here. ठीक है. चलिए जी, अब आते हैं आगे कि पढ़ना कब से है. This is the most important thing. And guys, we always say that the last 5 months is the key for GA. I will not say कि यार आपको आज पढ़ना है. बेनिफिट नहीं है. रिटर्न ऑफ आउटपुट 0 है. ठीक है. क्योंकि अभी पढ़ोगे तो वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे. फॉर एग्जांपल, इफ somebody has been appointed as chairman of some body at this point of time, they are not asking that question here. तो क्वेश्चंस तो आपके आते हैं लास्ट 5 मंथ्स में से, और अगर 5 मंथ्स भी नहीं होते तो आई विल बी सेइंग हियर लास्ट 3 months is the
key here. So you can see behind me also, ठीक है जी, there were 22 questions, 19 questions are from past 5 months. Almost you can see around 85-90%, and there are only 3 questions which are beyond 5 months. So you can see your maximum return of output is in the 5 months here. Now comes the next important thing. आप बोलोगे सर सारी वीडियो देखी पर आपने एंड में तो धोखा दे दिया, आपने बोला कि 5 महीने पढ़ने और आज मैं क्या करूं, ठीक है कुछ तो पढ़ूं। भाई आज आप क्या कर सकते हो, स्मार्टनेस इज अ थिंग हियर। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज दिखाई थी, वेटेज ऑफ जीए सेक्शन, वेयर आई हैव टोल्ड यू out of the current affairs 23 questions are from GA, but the rest questions are from ESI and finance. There is a question from static also, because static is relevant for phase 2 also. So what is the right approach here? अभी आपको क्या करना है, आपको अप्रोच करना है the ESI and finance current affairs that you can see और understand करना है, क्रैम नहीं करना, you just have to understand this current affairs. Similarly, if I talk about the descriptive answer writing, best time to start descriptive answer writing that you should do here. And the other important thing, guys, if you want to read general awareness, I am not saying completely omit this thing, पढ़ना ही कुछ नहीं है. What you can do, you can focus on the topic that I have highlighted in the beginning, that is first in news. Because this is one topic, if something has taken place for the first time in any of the things, be it environment, sports, awards, that is important, because if the question is being asked later on also, तो generally कहाँ से होता है, वो चीज पहली बार होती है. I give you an example of Singareni Coalfield. This is for the first time that the thing, that is a coal mining company में उन्होंने कुछ first time कोई चीज की थी, तो Singareni Coal Mines न्यूज में था, तो क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने, ठीक है. सो दिस इज द थिंग हियर, दैट इज दिस इज वन टॉपिक विच यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग करना है. कोई भी न्यूज़पेपर खोला, अगर उसमें कोई चीज लिखी हुई है कि पहली बार हुई है, हाईलाइट दैट टॉपिक एंड स्टार्ट रीडिंग दैट स्पेसिफिक थिंग देयर. दिस इज द थिंग टू बी रिमेंबर्ड हियर, ठीक है जी. अब आते हैं अदर प्रोमिनेंट थिंग्स के ऊपर, कि अब जैसे मैंने बोला 3 मंथ्स, ठीक है जी, तो क्यों, मतलब क्या वाकई मैं बोलूं 5 मंथ्स करने हैं. देखो एग्जाम मैं आपको बता रहा हूं, पीछे 29th of May, 6th of June, and your examination is in the month of June. You can see the last 3 months here, ठीक है जी. फिर 18th of May, 22nd of May, which means गेम देखो लास्ट 3 महीनों के इसमें, तो अभी एफर्ट लगा के कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है. तो जीए सेक्शन हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट मैंने पढ़ाया, मैंने बता भी दिया कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है जी. तो एंड तो ये होगा 5 मंथ्स वाला. अब पढ़ना क्या, इसको समझते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं. सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने हैं गाइस, मैंने आपको गाइड दे दी है, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए. That's the first thing you have to do. Second thing you have to do is start now to at this part of time understanding of the current affairs, because I have seen majority of students when I say them na read current affairs for past 5 months, वो current affairs पढ़ते ही नहीं हैं. Understanding the current affairs will help you make a consistency here, because if you see any of the topper, कोई भी टॉपर देख लीजिए, या फिर आप कोई भी ऐसा बंदा देखिए जो कि एग्जाम क्लियर कर रहा है, उनके माइंड में एक चीज होती है कंसिस्टेंसी. इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, नहीं होने वाला कुछ भी. आपको आना है यूट्यूब पे, अगर आना है वीडियोस देखनी है तो डेली देखने हो वीडियो, और अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या चीजें हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड हैज बीन गिवन टू वहीदा रहमान. इट माइट बी अ थिंग, दे माइट नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट लेट्स से नेक्स्ट ईयर यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन and the interviewer asks you a question of Dada Saheb Phalke Award. It might be given to some other personality. So you can also tell to her na or him that is, the Dada Saheb Phalke Award, previously it was given to Wahida Rahman ji. Rajnikant sir has also won this award. No, it's not a thing that has helped in phase 1, but interview में quote हो जाएगी. Second thing, let's talk about some defense exercises taken place. If these defense exercises are going on, let's say in the regular intervals, when you are reading, start reading the current affairs, let's say from the month of December onwards. Now, when you have opened any document, your mind is trained in such a way where you will be knowing, you will be able to know कि अच्छा यार ये चीज मुझे पढ़नी है, क्योंकि ये consistently न्यूज में चल रही है. So it will not be a burden for you for this last 3 to 4 months. So this is the most important thing. एंड वन टॉक अबाउट जीए, तो वो मेन फोकस 5 मंथ्स पे करना है. तो मैं बोलूंगा डेट अगर आपको बोलूं तो आप क्या कीजिए, 1 दिसंबर की एक डेडलाइन रख लीजिए. 1 दिसंबर से आप स्टार्ट कर दीजिए जीए पढ़ना, ठीक है जी. और अभी अगर सकती हो, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि पहली बार न्यूज में आया है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, सो स्टार्ट रीडिंग दैट थिंग, ठीक है जी. एंड वन थिंग आई विल से टू अनदर पर्सन ऑल्सो, दैट इज, एक चीज मैं आपको यहां पे खुद ऐड करूंगा कि यार अभी ना एक काम जरूर करना, आपने एक काम करो अभी, बिकॉज आई टोल्ड यू डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. सो
you should read one editorial every day. This is one thing that you must do. Read one editorial every day that is related to the syllabus. ठीक है जी, and start making your own perspective because this is the right time. अभी facts याद करने का time नहीं है. Facts होने लास्ट 3 महीने में होंगे, बट अंडरस्टैंडिंग बनानी इज द मेन थिंग हियर दैट यू हैव टू फोकस ऑन. और इसके लिए हम आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया था यूट्यूब पे वी आर हेल्पिंग यू विद द पीआईबी सीरीज, with the finance current affairs series. We have with you the current affairs, that is the analysis session is here, that is the thing here, and then we have a session that is by the name of fast track also. ठीक है, तो एक फास्ट ट्रैक सीरीज भी है आपके साथ जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग आती है विदाउट एनीथिंग, वी आर क्रिस्पली कवरिंग द थिंग्स हियर. सो दैट इज वन सीरीज दैट यू कैन वॉच हियर. ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे. जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल गेट द नोटिफिकेशन अबाउट दैट आल्सो. बट इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू वांट your preparation to be enhanced, so guys, we are helping you with these two prominent things here. That is the complete package of RBI. If you are a beginner, you are not well versed with QRE, you want to start from the basics, you want to start current affairs from the basics, everything is covered here. So phase 1, phase 2 interview, everything we will be holding you, that is under the gold package. Then if you are well versed with QRE but you are weak in GA section, or if I talk about you are weak in the finance management part but our QRE ठीक है, so you can go with the silver package also. Only one thing is here, you will not be getting the mock test with respect to the phase 1. रेस्ट आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा एक्सेप्ट QRE एंड द फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ फेज 1 हियर. सो गाइस, अदर देन दैट फिर भी आपको आई थिंक कोई भी डाउट आया है तो डू नॉट वरी. ठीक है जी, देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो विद रिगार्ड्स टू द वर्कशॉप, दैट इज अ स्ट्रेटजी वर्कशॉप कंडक्टेड बाय अंकित सर. सो यू कैन जॉइन दैट वर्कशॉप आल्सो एंड एनीथिंग इन योर माइंड आस्क हिम. ठीक है जी, एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू GA you want to ask me, you can ask me also by dropping me an email also, that is at hello@edutap.co.in. So this is all from this video guys. So wishing you all the best for the examination. Keep working hard and keep preparing hard, and I am hoping that now you have got more clarity on the general awareness. So if you have got the clarity on GA, tell me in the comment box, yes sir, it's clear now. Wishing you all the best.